Assalamu alaikum everyone, this is Sabahat and I'm here in this evening session, and I thought of discussing something different with you other than what I usually do. So uh, let me just check who is online, because there's still some time left over here, and then we can start with our session. Okay, I'm just checking out. I think I did tell. Let me just see. Okay, so in the meantime, till I wait, I can just leave a short message that I'm live, and okay. Well, I know there's someone over here. So if you can just, and there are others as well. Well, if you can just post your emojis or hi or hello or salam alaikum or whatever, that would be easier for me to know who is that who's watching. Um, okay, it's just, I'll just leave a plain message. Okay, so what do you think I plan to talk about? Like the caption says 2024. Any ideas? I'm all ears if you have any ideas at the top of your mind what I plan to discuss today. So do drop your, comments so I know. Okay, it's just 2024. Okay. Okay, who is this? Who is watching? Who are watching actually? There are many others. So just leave your feedback in the comment box, and I'll just start in a minute. So today I was just thinking what to discuss with you people, what insight can I share, and then I just thought about, well, it's 2024, so what are the different things that are associated with 2024. So I had some things in my mind and I plan to discuss them today with you. And the first thing that comes to my mind is, since it's 2024 and many of us, we might have had or are still in the struggling phase and having difficult times, in making this year productive, and we have been, planning and struggling in the previous years. So today, what I plan to talk about is that what are the, what kind of business opportunities can we, gauge in this year? And if we want to, invest our money or our energy, so what are those opportunities which we can, get into and make the best of them? So today, I just plan to discuss some of those business opportunities which I have found myself to be really helpful and effective as well. And like if you just keep on noticing or observing different things which are going on in the background, side by side, whatever you're doing, so you can easily connect the dots, and that these things work. So if other people can do it, why not you? And it's not difficult things. You just need to connect the dot, and you just have to see examples before you. What are those examples? So the first thing which I think is, like, if you want to have a side business, you need to invest yourself, your skills and your time in technology and software development. Well, now and the coming years, it's going to be the time of artificial intelligence, which we usually say AI. So AI is going to take over everything, but don't take AI in the negative sense. It's always, technologies and things related with technology, they're always beneficial and they always help you. So in order to be at par with the coming generations, and as well as the coming technology and upscaling of everything, since everything is being upscaled
Now there was a time, if even if you just had a basic skill, like if you knew how to write on paper, then it writing on paper was replaced by online writing in the digital sense. And then for that you had to gauge yourself with that required skill, how to write online, or how to publish your articles or do research. So with time, slowly and gradually, you upgraded your skill and you move to that level of the digital one. So same is the case with the art, like if you weren't into that thing, then you would have suffered, cause now the time and even the coming years, it's of more of remote working. And to be good in remote working, you need to have these skills. So when I talk about technology, it's thank you for whoever is on camera, and I'll see if I can bring you on camera at the end. So you need to gauge skills regarding technology and software development, which includes artificial intelligence, and then it includes machine learning as well. And you need to know these applications as well. So those of you who are already into MITs, or are pursuing in artificial intelligence in different forms, or even learning different apps, so all these skills, they are really helpful, and they are going to be the people in these roles, they are going to be leading many areas. So every company, if I just talk about technology, every company needs people who are techie. So this is one thing. And then if we talk about cybersecurity, then cybersecurity is also very important. And then you can learn about different cybersecurity solutions. Or if you are dealing with cybersecurity on the on the ground level, so then there are many companies, and even the societies which are being developed, they are always in need of cybersecurity personnel. Now, cybersecurity on the field, it's more of training. And if you are doing, online work or remote working work, then cybersecurity, it's the basic credentials which you need to know. Like if you're working on a software or in an organization, then definitely you'll be looking at different, overall software or the interface, whether it's being hacked or it's not being hacked. So you have to keep that um, overall software safe from hackers. So then there are so many other things which are included in cybersecurity solutions, which I might discuss at a later stage with an expert who's a cybersecurity personnel and professional in his field. So I'll be taking him on board, and I'll be discussing with him in the form of a podcast. Okay, I'm sorry. Then another thing is, you need to like you need to know software development for specific industries and niches. So these are all the things which are related with technology and software development. And these are the most, I would say, profitable businesses if you want to invest in them. Okay. Then another business which you want to invest, it's the health and wellness, niche or a business which you can invest in. And again, there are certain pinpointed businesses which you can pursue in those categories. Like in the health and wellness area, you can deal with telehealth and remote healthcare services. Nowadays you might have seen these services are really in. Why they're in? Cause just it's not long ago, still 2 or so years, when we had COVID, we couldn't visit the doctors in the proper sense. So everything went online. So this switching from field to online, it has not only benefited many businesses, but in fact it has helped us overall in protecting ourselves from different ailments. And then if you can find good doctors,
there are really good services and consultations which you can take while utilizing these tele services or telehealth services. And then you might have seen once there was uh, okay, let me just read a comment, and I'll just move forward. Walaikum assalam, Nihal. I hope some of your issues were addressed in yesterday's session. Nihal, do let me know. Okay, this is Engineer Marvat, and he's saying if you give us some material in hard or in written form, so it's also helpful for us who are watching this video later. So make some notes. Okay, so for this matter, whatever I'm explaining in this live session on Facebook, um, after 1 or 2 days, I upload this same video on YouTube. And in YouTube, if you go and look at the description, all the notes are given over there. So you can always go to YouTube on my channel, and then you can um, make notes from those videos. I'll just, in the meantime, I'll just leave my YouTube channel over here, so you can always go and visit over there. And plus there are many other videos over there which you can watch, and you can gauge a lot of expertise from there as well. So I think when you go over there, then you won't be needing any written or hard material. So it would be, since it's on YouTube, it's going to be over there, it's not going anywhere. Okay, so as I was talking about health and wellness, so I think my throat, it's, I just hope my voice doesn't go, and it's over here. You're most welcome, Engineer Marvat. Okay, so health and wellness, that's another business area which you can focus on. And that is like, if you remember COVID times, you might have had so many online consultations, because back then everything went online and nothing was on the physical side. So many doctors, they too got into that a switch of profession from field to online. But now everything is back to normal, but still there are many doctors which you will find online, rather than giving physical consultation, and that helps a lot. It saves energy, it saves money, and it saves time as well. And when you can get consultation online from a capable doctor, then why not take that consultation, rather than utilizing fuel पेट्रोल फूक फूक के जाएं और फिर उसके बाद जो है इलाज कराएं. सो कहीं पर तो पैसे बच जाएंगे ना. So that's the thing, that's the underline behind it. Okay, so इसके अलावा जो है health and wellness में जो है एक और जो चीज़ है, you can always start businesses regarding, अगर health ही आप ले रही हैं, then what you can do, you can focus on those gadgets or those apps which are related with those health. So these are the insights which I have searched, and I have seen over the years किस तरह businesses flourish कर रहे हैं. And so I thought, why not share my knowledge with you, so you people, those of you who are struggling to have a side hustle or want to do something, so you can always look into these different industries and niche, and you can get on with it. And also it also depends कि भाई if you are interested into certain businesses, like if you are a tech kind of person, you would be looking for a software niche or a software या डेवलपमेंट साइड पे या टेक्निकल साइड पे, यू वुड बी लुकिंग एट सम बिजनेस, क्योंकि इट्स केटरिंग द स्किल you already have. And then again, it also depends on the kind of passion you have. So agar if you are a tech geek or anything like, thank you so much, thank you Sham bhai, thank you for your comment, it means a lot. So if you are that kind of person and you are passionate about a certain thing, so everything complements each another. So this is another thing कि आप जो है, if you are into health, then आप जो है health wearables या apps उससे जो related हैं, you can always get those products, and then you can start business with that. और then उसके अलावा जो है एक और चीज़ जो आप कर सकती हैं, you can also personalize nutrition and wellness programs or wellness services. So most of the health professionals who are nutritionists or who are into wellness areas, or who are dietitians,
or even if we talk about psychologists and psychiatrists, they too are providing these kind of services which are really helping businesses, and these are a whole business. And then you know what, I think कि no business is bad. आप अगर कोई छोटा सा business भी उठा लेना तो it is as good as a big business. So one insight which I have observed over the years from my personal experiences, जितने भी बड़े businesses होते हैं ना, if we talk about the big names, and you might be knowing the big names as well, so I don't have to name them, and it doesn't look nice if I pinpoint any business. So these businesses initially they started from a very base business, and that business can be anything. It can be a very small business. It can just be a laundromat business, or it can just be a small shop of some kind. So their seed money came from that small shop or small business, and then they were able to elevate themselves and uplift themselves with the changing times, and now they are big business tycoons. So this is how businesses work. And then एक और जो चीज़ इसमें होती है, you don't have to be shy. Like I don't know why we get this idea of एक वो जो खामखा की शर्म आ जाती है कि भाई लोग क्या कहेंगे. Stop getting into these nitty gritties. लोग क्या कहेंगे, लोगों ने कुछ नहीं कहना. या अगर लोगों ने कहना भी है तो they are always going to say. You just have to have this positive mindset. Okay, what I am doing this for my own good, or for developing myself, or for sustaining my family, and that's why you do these things. And if you just get out of this thing कि भाई लोग क्या कहेंगे, you will see you will achieve success in no time. इन नो टाइम का मतलब ये नहीं है कि आपने आज शुरू किया तो 1-2 महीने में आपको इन नो टाइम मिल जाएगा. इन नो टाइम में भी जो है ना काफ़ी साल आ जाते हैं, 3-4 साल फिर भी आ जाते हैं. सो इट ऑल डिपेंड्स कि व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स यू आर employing, whether you are going in the right direction or not, whether you are collaborating with the right people or not. So वो जो है ना, जो success है, it all depends on these things. So you need to keep these things in mind as well. अच्छा, अब हेल्थ और वेलनेस से आगे जब हम चलते हैं तो और एरिया जहाँ पर इन्वेस्ट किया जा सकता है, दैट इज़ दी सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली बिजनेसेस एज वेल. और वो कौन से होते हैं, वो अगेन जो है, नाउ दीज आर ऑल दीज बिजनेसेस जो कि ऑलरेडी हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं. यानी इट्स नथिंग न्यू दैट आई एम टेलिंग यू. इट्स जस्ट दैट कि आई एम यूजिंग माई माइंड, आई एम कनेक्टिंग द डॉट्स एंड आई एम टेलिंग इट टू यू, बिकॉज I have this nature of researching and connecting the dot, and coming up with these kind of solutions. So सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली बिजनेसेस की जब हम बात करते हैं तो उसमें आ जाते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस, विच इज़ द नीड ऑफ टाइम, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और अब जो है, पहले इसका रुझान कम था पर अब बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि विद दी fluctuation in the electricity bills and the gas bills as well, you need solutions. So renewable energy solutions जो है, that is the solution to many of our problems. So though it is in some areas it is expensive, but still वो एक दफ़ा का खर्चा है. वो एक दफ़ा का खर्चा हो जाएगा तो वो हर महीने जो आपको जो है कभी एडजस्टमेंट की मद में, या कभी जो है बिल की मद में, या कभी कोई जो है अनफोर्सीन जो है एरियर्स जो कि आपके जो है नॉलेज में भी नहीं होते, वो बिल्स लग कर आ जाते हैं. सो एक ही दफ़ा का हल है. वो बिल जो आप हर महीने देंगे, वो अगर एक साल में जो है एक साथ ही आप जो है वो पैसे दे देते हैं तो आपको सुकून आ जाएगा. So this is another thing. Then sustainable products and packaging, that is also a very good business, and it is very, I think it is cost effective as well. So if you can find the appropriate people, and then you can start businesses with them. अच्छा, then एक और चीज़ जो मैं देखती हूँ कि इट्स नॉट नेसेसरी, अगर आप ये सोचें कि भाई मैंने जो है सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स का बिजनेस करना है, या मेरा ये प्रोडक्ट है एंड इट इज़ वेरी सस्टेनेबल, अब उसकी जो पैकेजिंग है, या उसकी जो डिलीवरी है, या उसकी जो मार्केटिंग है, इट्स नॉट नेसेसरी वो सारी भी आप नहीं करनी है. व्हाट यू कैन डू इज़, देयर आर ऑलवेज पीपल
people in our surroundings, people in our neighborhood, or people living in different cities. अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो you can collaborate with the like-minded people or the people who are already in this field. हो सकता है किसी की डिस्ट्रीब्यूशन की सर्विसेज हों या किसी की डिस्ट्रीब्यूशन की इंडस्ट्री हो या इवन जो है कॉटेज इंडस्ट्रीज हों और यह है कि यू कैन collaborate with them and then you can ask them कि ओके मेरा ये प्रोडक्ट है, इफ़ यू कैन डू द मार्केटिंग, आप उनसे जो है collaborate कर लें एंड यूल सी कि वो जो आपने अपने जहन में खपत करनी है हर चीज़ खुद करने के चक्करों में, तो वो चीज़ खुद करने की बजाय अगर आप जो है वो लोग जो कि उस एरिया में स्पेशलाइज हैं उनके साथ जो है आप कोलैबोरेट कर लें तो आपका काम जो है आधे से कम हो जाएगा. सो ऑल यूल बी नीडिंग इज देन यूल बी नीडिंग टू डिलीवर इट. और किस तरीके से आपने लोगों के साथ कोलैबोरेट करना है. सो इट ऑल डिपेंड्स कि आपका जो बिजनेस है आपने किन लोगों के साथ कोलैबोरेट करना है और किस तरीके से करना है. सो सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली बिजनेस में एक ये दूसरी चीज़ थी. देन एक और जो चीज़ है इको टूरिज्म एंड ग्रीन ट्रेवल, that is also a really good business and you can always go for it. And since our part of the world it's really pretty, so you can just have different areas and pinpointed areas कि कहाँ पर है tourism it's going to be more marketable and then you can market it. अब मैं जो हूँ इसको किस तरीके से देखती हूँ, अगर like if we just think about Africa or Kenya, so इधर जो है यानी to the outside world या even a base person, an amateur or layman, they just know कि it's poverty stricken country, but that's not true. Actually they have the richest tourism and जो उनका overall जो है landscape है it is very attractive for the tourist. So उनकी जितनी जो है mostly जो economy है that is based on that tourism. So वो जो safaris हैं when foreigners come या even कोई भी जो है वहाँ पर चला जाता है तो that safari and everything that's really captivating. और वो जो है यानी वाइल्ड लाइफ के दरमियान में जो है बैठ के जो है आप अपनी कैंपिंग कर रहे हो या इवन आप उधर सो भी रहे हो. खैर मुझे तो सोच के भी वहशत होती है कि शेरों के और टाइगर्स के दरमियान में कोई किस तरह सो सकता, तो नींद ही नहीं आएगी. यहाँ पर तो जहन में जो है जिन्न आ जाए तो नींद नहीं आती, तो वहाँ आप जो है शेरों के और जानवरों के दरमियान में सोना. बट आई थिंक इट्स जस्ट एडवेंचर, जिनमें ज़्यादा एडवेंचर होता है या जो ज़्यादा जो है जिनको शौक होता है इस तरह के जो है एक्सपेरिमेंट्स करने का या चैलेंजेस फेस करने का, तो उनके लिए इट्स नॉट अ बिग डील. बट आई वुड नेवर गो इन द मिडल ऑफ शेर एंड want to sleep over there just for just to enjoy that sight directly eye to eye. So मेरा ख्याल है कि I'm good. But जिसने जाना हो, you people are more than welcome to go and explore this safari tourism in South Africa और you will really enjoy. अगर आप में जो है ना गट्स हैं और दिल गुर्दा है, मेरे में तो नहीं है. मैं तो बस सोच के जो है ना मेरे सिर्फ सोच लेती हूँ बस, वही ठीक है. ओके, सो दिस इज़ अनदर थिंग. एंड देन एक देन अनदर बिजनेस विच यू कैन डू is you can start with e-commerce and digital services. That is also a very productive business. और आजकल जो है हर दूसरे बंदे को आप देखेंगे तो they would be saying we are offering digital services. अच्छा, अब then again you have to be pinpointed regarding the niche and you have to be have this area of whether you have those relevant skills or not. अब कोई भी business करने के लिए you need to see कि which skills are appropriate या कौन सी आपकी skills हैं जिसके मुताबिक आप business कर सकते हैं. So you have to keep these things in mind when you start a business, whatever business that is. So अगर e-commerce की बात की जाए तो it niche specific e-commerce platforms पे आप काम कर सकते हैं. So whatever that niche is, whatever the product is, then again अगर just आपको ABC भी पता हो कि how are you going to find the niche specific products, क्योंकि हर जो प्रोडक्ट होता है या कोई भी आप चीज़ ले रहे हैं ई कॉमर्स के लिए भी कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं, लाइक अगर हम जस्ट मेकअप को ही ले लेते हैं
ठीक है, मेकअप में भी जो है, देन लिपस्टिक को चलन लेते हैं हम, तो लिपस्टिक में भी जो है देयर आर सो मेनी ब्रांड्स, बट देन यू हैव टू स्पेसिफाई कि लिपस्टिक कौन सी वाली लिपस्टिक पे आप फोकस करना चाह रहे हैं. ऑब्वियसली यू विल बी लुकिंग एट द ट्रेंड्स ऑफ द पीपल कि भाई वो कौन सी लिपस्टिक है जो कि ज़्यादा पसंद कर रही हैं, वेदर इट्स अ शिमर, वेदर it's a shiny, it's a glossy, it's a matte lipstick, and what are the colors, whether it's red, whether it's pink, whether it's nude. So there are so many colors, so you have to pinpoint and you have to do your research. और वो research इसी तरह होगी कि when you talk to people or when you know dig out on the internet कि भाई कौन से जो trends जा रहे हैं, and you can always do Google trends कर सकते हैं आप, then you can do different product hunting. एंड देन हमारे जो है इतने ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पे आप जो है जाकर देख सकते हैं कि भाई उनके जो मेकअप की कैटेगरी है उसमें कौन सी चीज़ है जो कि ज़्यादा सेल हो रही है. सो दीज आर ऑल द थिंग्स विच यू कैन डू एंड अडॉप्ट. और इसमें जो है कोई पैसे नहीं दरकार. प्रोडक्ट सर्चिंग करने के लिए आपको जो है यू जस्ट नीड टू हैव अ गुड नेट, एंड मोबाइल भी आपका चल देगा. यू जस्ट हैव टू डू द रिसर्च. दैट इज़ इफ़ यू want to do some business. So this is how you start with businesses. अच्छा then इसके अलावा जो है डिजिटल सर्विसेज में एक और जो सर्विस है विच इज़ ऑल्सो वेरी प्रोडक्टिव, और ये जो सर्विस है ये सिर्फ ऑन ग्राउंड ही नहीं वर्क करती बल्कि ये ऑनलाइन भी बहुत बखूबी वर्क कर सकती है. एंड द स्किल विच आई एम टॉकिंग अबाउट इज़ online education and e-learning platforms. So this is very effective and it's a very successful business as well, and you can always go for it if you have the aptitude for it, if you like teaching or if you like talking to people. Kyunki talking and teaching, these are two different things. It's not necessary everyone can talk, and then it's not necessary everyone can teach. You need to have that capability, you need to have a certain approach, a certain a certain mindset to deliver, to teach people. So ये अगर आपका एप्टीट्यूड है एंड you can deliver that well, whether no matter what it is, no matter आपका सब्जेक्ट है या नहीं है, but you have that capability of delivering, then you can always go into online education or online e-learning platforms. So you'll be able to deliver whatever you have thought about. So this is another thing. अच्छा then हम जो है ना आगे चलते हैं और कौन से businesses हो सकते हैं. और जो है देन वी कैन टॉक अबाउट रिमोट वर्क एंड कोलैबोरेशन टूल्स. और उसमें जो है यू नीड टू नो अबाउट दोज टूल्स एंड सर्विसेज जो कि आपको हेल्प कर सकती हैं इन कोलैबोरेशन. सो दिस इज़ अनदर थिंग. ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपको रिमोट वर्किंग में कोलैबोरेशन में हेल्प करेंगी. एंड देन और आप क्या कर सकते हैं अब, यानी जिस तरीके से ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, जिस तरीके से इकोनॉमी चेंज हो रही है, तो बहुत ज़्यादा जो इस टाइम पे इन है ना, दैट इज़ वर्चुअल कोलैबोरेशन. सो यू कैन ऑलवेज डू वर्चुअल कोलैबोरेशन. लाइक आई एम सिटिंग एट द कंफर्ट ऑफ माई होम इन माई ऑफिस जो कि मैंने बनाया हुआ है, और यह है कि आई एम डिलीवरिंग and this is a virtual collaboration which I'm doing with you people. So you can easily connect, and nowadays everyone has a mobile phone, or they might have some system, some source, mobile ho, laptop ho, computers ho, and they can easily communicate. So all for this all you just need a network package or any package or bundle which you have, चाहे आपके यूफोन है, चाहे टेलीनॉर है, जोंग है, whatever. So हर एक के पास नेट तो होता है. So with that net you can always call up the person and you can talk to that person and take appropriate guidance or consultation, जिस तरीके से भी होता है. And that is how you make use of virtual collaboration. और इसी तरीके से जो है अब जो businesses हैं वो हो रही हैं. वो टाइम जब हर चीज़ जो है फिजिकली होती थी and everything was on ground, I won't say that it does not exist or it's not necessary. It is necessary when it's required. अगर कोई ऐसा business है, like if you're talking to a person, like if you're doing virtual collaboration and the person, the other business जिसके साथ आपने collaboration करनी है, they are in Lahore, then you can always talk with them, and whenever you visit Lahore you can pay a visit to them. So इस तरीके से आपके जो collaborations होते हैं वो ज़्यादा पक्के हो जाते हैं, क्योंकि then the person knows कि at the other end जो बंदा है या बंदी है how serious they are.
and that is how जो collaborations हैं they are developed into businesses, or you become business partners. So this is how things work. And then virtual collaboration platforms के अलावा you can always अब ये वाला जो है what I'm going to tell, it is very productive, and if you can just get into it, आप ये देखें अक्सर जो लोगों के हैं ना वो मसाइल हल हो जाएंगे. दैट इज एम्प्लॉई वेलबींग एंड प्रोडक्टिविटी सॉल्यूशंस. So anyone who's thinking out of the box and they are looking at कि ओके ठीक है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन काम करी है उसमें जो है एम्प्लॉयज तो होंगे ना, और अगर कोई बंदा खुद एम्प्लॉई है, या इफ़ you have first hand knowledge about employees, like when I used to work as a ADB consultant, gender consultant, so I was the employee and I could see different things in the environment. But since I was working in the gender department, तो मेरा जो ज़्यादा काम था that was with the community people and in the field in the Barani districts of Punjab. So I used to visit the community in the fields, or the women and the men, और उनके जो भी problems होते थे, and how I could provide sustainability to them via the project. So that was my focus at that time. And since I was meeting with so many people and conducting meetings with them and knowing their mindset, so it was easy for me to comprehend कि okay ये इनकी need है और ये इनके problems हैं, and this is what the project is meant to establish कि भाई इनको किस तरह sustainable बनाया जाए, और किस तरीके से वो कौन से ऐसे काम किए जा सकते हैं, या वो कौन सी ऐसी interventions की जा सकती हैं कि once this project is winded up, so they won't be in that process of asking or looking for aid or financially जो है dependent हो जाए project पे. So that was what I was doing. I was catering for the needs of the people over there. And जब आप organization में work कर रहे होते हैं तो आपके इर्द गिर्द भी जितने लोग होते हैं, so since you are in that position you can easily cater for the needs. And then when you are a boss or you are a CEO of an organization, you can keep those things in your mind. मसलन जो है this is one example. Then अगर जो है आप देखे जाएं, since I'm a woman and I know these things happen, like any female who is working in office, जब तक वो जो है unmarried होती हैं तब तक everything is fine. But once that female is married, then what happens is that वो चीज़ें होती हैं जो सिंगल के लिए तो डिफरेंट होती हैं, बट फॉर अ मैरिड इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट. और उसमें सबसे पहली चीज़ ये आ जाती है कि टाइमिंग्स जो है ज़रा जो है इट्स क्वाइट अ लॉट फॉर द फीमेल लॉट. एंड देन अगेन जो है ऐसी ख़वातीन हु आर ऑन द वे टू फैमिली लाइफ, तो उनके लिए वो वर्किंग सिचुएशन एंड देन सिटिंग एरिया वो काफ़ी अनकम्फर्टेबल हो जाता है. एंड देन इट ऑल डिपेंड्स कि आपके साथ कितने बंदे काम कर रहे हैं. Thank you, Yavar Abbas साहब, for joining in and watching this session live. So उनके लिए जो है ना, then like I know this क्योंकि when I was working as a gender consultant, when I joined, I wasn't married. But ये है कि after a month or so I got married, and then उधर ही project में I was यानी I was on my family way, and then I could face the difference कि वो जो बैठने की chairs थी, those were not very comfortable. Then हर एक के जो है everyone's pregnancy is different, and जो चीज़ें natural हैं you cannot ignore those. Like since आप इतने एक्सपीरियंस नहीं होते हैं and you don't know about these things, but as you gauge experience and you become an elderly person, so you can easily face कि हाँ भाई जो ख़वातीन इस तरीके से होती हैं वो क्या चीज़ें फेस करी होती हैं. so back then वो ज़रा थोड़ा सा अजीब हो जाता था. like जो women होती हैं mom to be, they are prone to sleep a lot, और इवन ऑफिस आवर्स में भी उनको बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है. एंड इट इज़ नॉर्मल, इट इज़ नथिंग इज़ एबनॉर्मल. दो मुझे बहुत लगता था कि भाई मुझे नींद कंट्रोल करनी है एंड आई कांट स्लीप एंड इट्स नॉट राइट कि ऑफिस आवर्स में आप सोएं. बट इट्स नेचुरल, जो चीज़ अल्लाह ने बनाई है, वाई शुड वी कंटेस्ट इट. सो बट अल्लाह का शुक्र है एवरीथिंग वेंट फाइन एंड सब कुछ हो गया. बट नाउ आई रिमेंबर दीज थिंग्स, क्योंकि अगेन ये वही चीज़ आ जाती है, इफ़ यू आर
ahead of a certain organization. You need to cater for these things कि आपके वहाँ पर जो ख़वातीन काम कर रही हैं, if they are on their family way, you have to provide opportunities. This is the well-being of the employee, क्योंकि you want your work to be done. और जो ख़वातीन हैं, they need to have some kind of protection, some kind of, a flexibility जिसमें वो अपना काम कर सकें. So this is one of the things. And then जिन ख़वातीन के बच्चे होते हैं, then again that's a problem. Most of the organizations, they don't have any child care rooms or anything like that. उसमें बॉस की जो सबसे बड़ा इतराज़ होता है वो ये होता है कि जी बच्चे जो है कि आप यहाँ पर काम करने आती हैं तो बच्चों को आप जो है नैनीज़ के हवाले करके हैं. वेल देयर इज़ अ टाइम आप जब बच्चों को नैनीज़ के हवाले कर सकते हैं. एक जो दूध पीता बच्चा है आप उसको नैनी के हवाले नहीं कर सकते. यू हैव टू feed them on their time. So you can't do like this कि भाई आप जो है ऑफिस आ गए हो बच्चे को जो है कहीं और छोड़ आए हो. So that's being negligent of your responsibility. This is a responsibility. जब अल्लाह ने आपको इस पोजीशन में डाला है, Allah has made you a woman or a mother, in fact, so you need to do these duties as well. Okay, Hassan Majid, the title of the lecture is कि we are discussing 2024 में कौन से businesses हैं जो कि हम pursue कर सकते हैं. So this is what I'm talking about, and this was one of the point कि अगर employee के आपने जो है यानी this is another business कि employee well-being आप किस तरीके से introduce कर सकती हैं. So I just got diverted a bit and I started sharing my experiences or what I felt back then when I was working as a gender consultant. So this is another thing. Let's come back to our topic. Okay, then जो है, thank you Hassan Majid for pinpointing it to me, वरना मैं जो हूँ digress हो चुकी थी. Okay, so एक और जो business है जिसको आप pursue कर सकते हैं, that is biotechnology and health tech. नाउ बायोटेक्नोलॉजी अगेन जो है ये भी जो है आपकी टेक में आ जाती है एंड यू कैन परस्यू दिस बिजनेस. इसमें आप जो है क्या कर सकते हैं, लाइक यू कैन ऑलवेज, अब वो लोग हु आर फार्मासिस्ट या बायोटेक्नोलॉजी में हैं या दे आर इनटू मेडिसिन्स, दे कैन ऑलवेज परस्यू दिस. या किसी का अगर इंटरेस्ट है तो दे कैन ऑल्सो गो फॉर इट. इट डील्स विद जेनेटिक टेस्टिंग एंड पर्सनलाइज्ड मेडिसिन. Then advanced medical diagnostic, this is another field जो कि business जो कि आप pursue कर सकते हैं. Again इसमें जो है यानी this is a thing which is related with AI, bioinformatics and data analytic in medicine और health care. उसमें किस तरीके से आप पेशेंट्स का जो डाटा है वो रिट्रीव कर सकते हैं in the form of data analytics and you can have those particular softwares. वरना जो है यानी आप देखें ना, एक टाइम था जब हर चीज़ जो है कागज़ पे होती थी एंड देन कुछ भी हो सकता है. लाइक if a record is on paper then that record can be lost or that can just go to waste. खुदा न खासा अगर कभी जो है किसी बिल्डिंग को आग लग जाती है, so जो रिकॉर्ड्स हैं पुराने रिकॉर्ड्स दे कैन गो टू वेस्ट. और अगर वो रिकॉर्ड्स वेस्ट हो जाएं, लाइक देयर आर मेनी डिपार्टमेंट्स, इफ़ यू रिमेंबर मैनी ईयर्स अगो ये ब्लू एरिया के करीब जो है एक आई डोंट नो वो स्टैटिस्टिक्स की बिल्डिंग थी, गोल से उसकी जो है आर्किटेक्चर बना हुआ था. आई डोंट रिमेंबर द बिल्डिंग, बट ये है कि उधर आग लग गई थी. तो उनका जितना खाता था वो अक्सर खाता जो है जल गया था. और अभी भी उस बिल्डिंग के रेमनेंट्स हैं कि वो दूर से नज़र आ जाती है कि अच्छा इस बिल्डिंग में आग लगी थी. So in order to prevent the records and the data of the patients or people or employee or any organization, you need to shift your systems to the digital side. और उसमें जो है computers and AIs they play a great role. So अब तो जो trend है उसमें if you have built in AIs, यहाँ पर जो है पाकिस्तान में कम है बट बाहर बहुत ज़्यादा है. इवन नाउ यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं जो कि बैक एंड पे कंप्यूटर्स पे शिफ्ट हो चुकी हैं या लैपटॉप्स पे या सॉफ्टवेयर्स में. सो देयर आर बिग सॉफ्टवेयर हाउसेस विच हैव रिकॉर्डेड दीज डाटाज और सर्वर्स होते हैं जहाँ पर ये सब रिकॉर्ड होते हैं. सो दिस इज़ अनदर गुड बिजनेस इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी इन दैट. ओके, थैंक यू हसन.
देन आई डोंट नो ये वाली जो है, ये वाला जो बिजनेस है, ये कितना काम करता है ओवर हियर, आई डोंट नो करता भी है कि नहीं करता, बट स्टिल इट्स a business which people tend to get into this business, and that's a blockchain and cryptocurrency. So जो इनमें जो है कर रहे हैं, दे माइट बी नोइंग अबाउट इट, बट मुझे इसकी ज़्यादा नो हाउ नहीं है, क्योंकि आई नो कि यहाँ पर अगर आप क्रिप्टो करेंसी का या बिटकॉइन का कोई काम करने की कोशिश करें, तो the next notice you get on your mobile is that you cannot deal in virtual currencies. So one should never go against the policies of the government. So जो आप अपने दायरे कार में रह के what is legal, you can always pursue those businesses. But yes, if you're living abroad and they don't have a problem with virtual wallet or Bitcoin or anything like that, you can always deal with these businesses over there, but not over here. So आप जो भी business करेंगे, you have to go through the policies of the government and see what businesses are applicable in the place you live, and what are not and which are not. So never go for businesses which are not applicable over here. Okay, so और इसके अलावा जो है और कौन से businesses हो सकते हैं? Yes, जिस तरह पहले जो है sustainable energy solutions के बारे में मैंने बात की, इसी तरीके से you can always go for solar and wind energy projects. These are also very successful and they are good businesses as well, क्योंकि जो bills की सूरत हाल है उसमें जो है we need a solution for that, and solar and renewable energy solutions, these are the best solutions. And then you need to employ or search for energy efficient solutions as well, and technologies and products. So this is another thing. अच्छा, then जो है इसमें एक और business जो मेरे ज़हन में आता है, that is you can always get into personal and home services. So personal and home services में जो है you can go for home automation and smart home services. This is also one way or other related with AI. If you have those kind of expertise, so you can always go for home automation or smart home services. Then smart home services में वैसे I think जो सबसे ज़्यादा successful है ना, that is जो आप किसी कंपनी के साथ like जिस तरह नया टेल हो गया, उनके like they have CCTV that is 24 hours. Even if you are having cybersecurity personnel in your home, so those guards, they are really well trained. And जो इनके साथ डील करते हैं, I'll be having a podcast with him, and then he can share every detail with you. So this is a very effective home service solution. And then AI's का if you have the skill, तो आप जो है खुद भी जो है ना home automation कर सकते हैं. अच्छा, then इसके अलावा then you can do a business regarding lifestyle management, कि वो आपने जो है किस तरीके से मैनेज करने हैं, क्या लाइफस्टाइल होना चाहिए, like they are mostly related with personalized plans. या जिस तरह हम जो है अगर कभी घर कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, तो we hire interior designers, और जो आपके जो है ओवरऑल स्पेस की जो है डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं, those kind of people, architecture people. So this is another service which you can provide, and it's more of a personal, क्योंकि हर एक के पर्सनल टेस्ट डिफर करते हैं, स्टाइल डिफर करता है. सो एक का घर दूसरे से टोटली डिफरेंट होता है. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रेफरेंसेस एंड योर लाइफस्टाइल, और व्हाट यू लाइक एंड व्हाट यू डू नॉट लाइक. एंड देन अगर आप ये देखें ना कि जो डिज़ाइनिंग और जो कलर एक घर के होते हैं, वो जो है किसी होटल के या किसी जो है सैलून के या इवन जिम के नहीं हो सकते. सो every area or every workplace or home, it differs from each another. So हर एक के जो है कलर कॉन्ट्रास्ट डिफरेंट होते हैं, स्टाइल डिफरेंट होता है, फर्नीचर डिफरेंट होता है, स्पेसेस डिफरेंट होती हैं. सो ये चीज़ें जो है अगेन यू कैन प्रोवाइड दी सर्विसेज. सो आमतौर पे जो है people are searching for people who can provide creative solutions. So again, this comes within creative solutions. If you can provide creative solutions, you can always give them a consultation, and they can easily come to you. So
you people can come to me too, क्योंकि besides other things I do a lot of other things as well. ओके देन आप और क्या चीज़ कर सकते हैं इसमें पर्सनल एंड होम सर्विसेज में. यू कैन ऑलवेज गो फॉर सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विसेज. अब सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विसेज ज़्यादातर वो लोग कर रहे होते हैं हु आर इनटू द डिजिटल साइट, लाइक इफ दे हैव वेबसाइट्स, so they can always have the subscription plugin, and it all depends कि उनकी जो वेबसाइट है is it worth it कि आप उसको सब्सक्राइब करने के लिए जो है ना देखें कि what have they got for you, and you should pay for their subscription. I remember earlier when my husband was posted in Karachi. अब चूंकि मैं बात कर रही होती हूँ तो मुझे उसमें से एग्जांपल्स याद आ जाती हैं. अब मैं अपनी लाइफ की एग्जांपल्स ही आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, या अगर आपके पास कोई एग्जांपल्स हैं तो आप मेरे साथ शेयर कर लें तो मैं इधर कोट कर दूंगी. सो that's a dot which I try to connect back and forth over the years of life. Okay, so subscription से मुझे याद आया कि I remember back when I was in Karachi, तो वहाँ पर जो है आता था एक जो है ना एक मैगजीन आता था, और उस मैगजीन की जो है यानी इट वाज समथिंग विच आई हैड सीन फॉर द फर्स्ट टाइम. बट देन इफ़ आई थिंक अबाउट टेक्नोलॉजी, तो कराची में बैक इन आई गेस ये मैं बात करी 2009 की, तो वो टेक्नोलॉजी उधर उस टाइम पे भी थी. एंड व्हाट दे यूज्ड टू डू वाज कि दे यूज्ड टू हैव अ 3-4 पेजेस mag or magazine, and it was a really fine graded paper, और उस हार्ड एंड ग्लॉसी दो. बट ये है कि उसमें जो सारी जगहें जो अच्छी अच्छी जगह या इवन जो कॉमन प्लेसेस भी होती थी उनके एड्स लगे हुए होते थे. जिस तरह जो है हमारे यहाँ पर संडेज को जो डॉन न्यूज़पेपर आता है उसमें क्लासिफाइड का ऐड होता है, और उसमें क्लासिफाइड के बल्कि 3-4 पेजेस होते हैं और छोटे छोटे वो ब्लॉक्स में उन्होंने दिए होते हैं, डिफरेंट एड्स दिए होते हैं. सो उधर भी जो है ना उसमें जो है वो ग्लॉसी और कलरफुल होता था. अच्छा, आज यहाँ पर सेल लगी हुई है, ये यहाँ पर ये फूड आउटलेट्स हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं. एंड दैट वाज अ रियली गुड मैग. आई स्टिल रिमेंबर इट क्योंकि व्हेन आई केम बैक टू इस्लामाबाद आई यूज्ड टू मिस दैट मैग, एंड आई कुड फील इट कि भाई that was a difference over there, और यहाँ पर कि we don't have these kind of mags other than जो हमें संडे में जो है कुछ मिल जाता है. या बट अब तो जो है बहुत सी चीज़ें जो है बहुत डेवलप हो गई हैं, इवन विथ केबल्स एंड everything. Now we can see every ad at the base of our TV channels which is running by कि आज इधर सेल लगी हुई है, आज इधर सेल लगी हुई है, and even in ads too. So things and marketing, so these are all marketing strategies which have changed over the time. So it just depends how much you are into those technologies and how much you absorb the good strategies and the good vibes, and you ultimately progress with them if you are using the right things. Okay, then जो end point है, end business जो कि आप pursue कर सकते हैं, that is that I have already discussed, and that is online tutoring and educational content platforms. So if you are an educational, or if you have a mind of an educationist, क्योंकि education, it's going to be always the need of time, and you should always invest in good education. or even अगर आप deliver कर रहे हैं, that should be good as well. And whatever skill you have, you need to tell it to people so they can so it can be beneficial for them as well, and they can learn something from it. So online आप tutoring कर सकते हैं, educational platforms पे काम कर सकते हैं. Then you can devise your own learning management systems, जिस तरह LMS systems हो गए, या different जो है platforms हैं learning के, digi skills है, then there are others as well, adaptive minds, and that's for children, though but still you can always employ different kind of learning management systems. या जिस तरह जो है teachable है, though it's not Pakistan based, but still it's a platform, या Udemy हो गया. So these are all learning management and e-learning systems. So if you are capable, and
I have no doubt कि यहाँ पर बहुत से लोग होंगे who are very capable and they can design these softwares. Even जो है इनको जो है verbatimly नहीं, but ये है कि you can pick out the good things in them and develop your own softwares. In fact हमारे साथ यहाँ पर हैं यावर अब्बास भट्टी साहब. He's a software engineer and he has a lot of good products. So if you are into technology, you should always approach him, and you can get your softwares made, and then you can do business with those softwares. So this is another thing. And then in the end, what I believe is you can always provide skill specific training, which is also the need of time. जितने ज़्यादा businesses होते जाएंगे, you need to have appropriate skills related with them. So क्योंकि if you have a 9 to 5 job and you want to pursue a side business, you can always pursue that business, but then again you have to learn some tricks of the trade and you have to collaborate with the right people. So आपका जो है 9 to 5 वाली job अगर आप करना चाहते हैं वो भी सफर ना हो, क्योंकि दैट इज़ योर सीड मनी. सो 9 to 5 जॉब आप तभी छोड़ सकते हैं व्हेन आपका साइड बिजनेस जो है इस्टेब्लिश हो गया हो. स्टार्ट में हर चीज़ को स्टार्ट होने में टाइम लगता है, प्रॉब्लम्स आते हैं, इश्यूज आते हैं, बट यू आर नॉट गोइंग टू रन अवे फ्रॉम देम. अगर आपने साइड बिजनेस डिसाइड कर लिया तो डू दैट साइड बिजनेस. वो साइड बिजनेस कुछ भी हो सकता है, कोई शर्म करने की बात नहीं है कि लोगों को बताते हुए शर्म आए. लोगों को नहीं देखना, आपने हर एक ने अपना देखना होता है. लोगों पीपल हैव नो कंसर्न कि आपके जो है पेट में खाना जा रहा है या नहीं जा रहा. ठीक है. सो यू हैव टू थिंक अबाउट योर सेल्फ, यू हैव टू थिंक अबाउट योर फैमिली, एंड दैट्स हाउ यू कैन प्रोग्रेस living within your limits. Thank you, Aisha, for joining in and watching. So these are the businesses which I had in my mind, and which I think are beneficial, and they are really good businesses if you want to have a sustainable living and a side living, a side hustle in the form of these businesses. Though आप start उसको as side hustle करेंगे, but in due course of time they are going to become your main businesses, and you are going to okay, thank you, Bia. You are going to excel from these businesses. So कोई भी business start करने के लिए you have to do your research, you have to do your ground survey, you have to do the market related survey, and then you have to check कि भाई आपका जो business है वो उस community में viable है भी कि नहीं. Like आप कहते हैं कि भाई मैंने जो है दूध की दुकान खोलनी है, और आपकी vicinity में 10 लोग already दूध की दुकान खोल के बैठे हुए, तो then it's not a viable solution. हाँ, अगर जो है आपने दूध की दुकान खोलनी है तो फिर आप अपने जो है सेक्टर में देखें कि कौन सी ऐसी मार्केट है. लाइक हर सेक्टर में जो है एक ही जगह पे छोटी छोटी मार्केट्स होंगी. सो आप ये देखें कि वो मार्केट्स एक दूसरे से कितने फासले पे हैं, और उन मार्केट्स में किस किस मार्केट में दूध वाला है या दूध वाला नहीं है. सो अगर कोई ऐसी मार्केट हो जिसमें इर्द इर्द जो विसिनिटी है उसमें लोग अच्छे खासे हैं, पर उधर जो है दूध वाला नहीं है, तो यू कैन ऑलवेज गो एंड ओपन योर दूध शॉप ओवर देयर. बट देन अगर एक ऐसी जगह जहाँ पर जो है दूध वाले ही बैठे हुए हर जगह पे, तो देन इट्स नॉट फ्रूटफुल एंड इट्स नॉट अ गुड बिजनेस विच इज गोइंग टू एक्सेल ओवर देयर. So this is what I had in mind, and now I'll see if I can take anyone on camera, and I just hope I can take people on camera. Okay, so हर रोज की मेरी जो है दिली दवा. Okay, it's rotated again. Okay, let's see. I don't know. So okay, let's see if I can bring someone on camera. No, I cannot add any guest on camera, and I don't know why. Okay, so that was all. If well, I have seen many of your comments, and thank you for your emojis, your दिल खोल के जो आपने मुझे emojis दी हैं, thank you so much. And emojis से ज़्यादा ये जो आपने comments दी हैं, they are really very useful, and I'm really motivated by just looking at these comments. So when I go offline, I will address these, and I will personally comment you back on these, and then maybe by the end of the day or even tomorrow I'll upload this video on YouTube, and you can go over there and make your notes. So everything what I have talked about in the video, it's going to be in printed form, digital form, not printed form,
but it's going to be written over there, so you can make notes of these. And thank you, it was lovely to see all of you over here. And inshallah कल मुलाकात होगी सुबह पहले vlog में, and then शाम को एक नए टॉपिक के साथ. Till then, bye bye and Allah Hafiz. Take care.